Hello students, myself Ashwani, and let's start now digestion of proteins. So in digestion of proteins, students, the end product is amino acids. Means when proteins will be converted into amino acids, then we will say that digestion of proteins is completed. So students, proteins digestion starts in stomach. When we ingest food, there is no digestion of the proteins in buccal cavity because buccal cavity does not contain any enzyme for digestion of protein. As food reached in stomach, there are two proenzymes for the digestion of proteins. Why I am saying proenzymes? Because that enzymes are still not active. So when food reached in the stomach, there are two proenzymes for the digestion of proteins, but first of all they have to get activated. And students, that two proenzymes are pepsinogen and prorenin. Prorenin is present in infants. In adults, prorenin is not present. Infants take mother milk and mother milk contain a specific protein. For that digestion, we need prorenin. So prorenin is found only in the infants. So now first of all students, these proenzymes have to get activated, and who will make them activate? That is HCl. So pepsinogen, when combined with HCl, it converts into active form, that is pepsin, and prorenin when combined with HCl, it results in formation of renin. So pepsin and renin are now active enzymes, and they will now help to digest proteins in stomach. So digestion of proteins started in stomach because stomach contain enzymes for digestion of proteins. Students, let's see how these enzymes digest proteins in stomach. First of all students, proteins under the action of pepsin are converted into peptones or proteases or peptides. These are different forms which are formed when pepsin act on proteins. Peptones are basically the large fragment which are formed when they are broken, when proteins are broken with the help of pepsin at first stage. And proteases are students, they are also hydrolytic form which is formed on action of the enzymes, and peptides are basically the small chains of amino acids. Long chain of amino acids are called polypeptides. Small chain, that is at least two amino acid chains, are called peptide, two or more amino acids. So peptones are the large fragment which are formed after digestion of protein by enzyme at first stage. Proteases are basically are also formed by hydrolytic action of the enzymes, and peptides are the short chain of amino acid, that is at least two or more amino acid they have. Now let's talk about the action of renin. Renin, I have already told that it is found in infants. ये बच्चों में ही पाया जाता है. बच्चों में क्यों पाया जाता है students? Because they take mother milk, and mother milk contain a protein that is called casein. कौन सा प्रोटीन होता है मदर मिल्क में? कैजीन. सो कैजीन पे जब रेनिन एक्ट करते हैं स्टूडेंट्स, दे कन्वर्ट इनटू पैराकैजीन एंड वे प्रोटीन्स. वे प्रोटीन्स आर व्हाट? Suppose when you make cheese, so during the processing of cheese, the water that gets separated from that cheese part, that is called whey, and that contain high amount of proteins. It is quite nutritious. So when casein is broken with the help of renin, what is formed? Paracasein and whey proteins. Next student, paracasein will combine with calcium and it will get precipitated to form solid calcium paracasinate. What happens when paracasein will combine with calcium? It gets precipitated to convert into a curd form, and that curd form is called calcium paracasinate. So paracasinate कैसे बनेगा? जब पैराकेजिन कैल्शियम के साथ मिलेगा, प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा और कर्ड फॉर्म में आ जाएगा. द प्रोडक्ट इज कैल्शियम पैराकेजिनेट. And then calcium paracasinate student will broken down further with the help of pepsin into peptones or proteases or peptides. So कैसे काम करेगा रेनिन? पहले कैजीन प्रोटीन को तोड़ेगा पैराकेजिन और वे प्रोटीन में, फिर पैराकेजिन कैल्शियम के साथ कंबाइन करेगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा, कन्वर्ट इनटू
a curd form that is calcium paracasinate, and calcium paracasinate फिर पेप्सिन की सहायता से कन्वर्ट होगा पेप्टोन्स और प्रोटियोजेस और पेप्टाइड्स. How proteins are digested in small intestine. So when proteins are reached in small intestine, student, they small intestine contain three types of juices: pancreatic juice, intestinal juice and bile juice. Bile juice has no role in digestion of proteins, so we will talk about pancreatic juice and intestinal juice. पहले बात करते हैं pancreatic juice की. Pancreatic juice contain three proteases. Proteases means वो enzyme जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं. So कितने proteases हैं? 3. But they are proenzymes, means they are in inactive form. और उन proenzymes के नाम क्या हैं? Trypsinogen, chymotrypsinogen and procarboxypeptidase. Pancreatic juice contain three proenzymes: trypsinogen, chymotrypsinogen and procarboxypeptidase. सबसे पहले इनको एक्टिव होना पड़ेगा. तो कैसे एक्टिव होंगे? सबसे पहले ट्रिप्सिनोजन की बारी. ट्रिप्सिनोजन को एक्टिव करेगा एंटीरोकाइनेज और एंटीरोपेप्टिडेज. इसको एंटीरोपेप्टिडेज भी कह सकते हैं. एंटीरोपेप्टिडेज. सक्कस एंट्रिकस इंटेस्टिनल जूस जिसको कहते हैं वो इसका सोर्स है. एंटीरोकाइनेज का काम ही क्या है? सिर्फ ट्रिप्सिनोजन को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना, दैट इज ट्रिप्सिन. और इसका कोई दूसरा काम नहीं है. सोर्स क्या है इसका? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. द सोर्स इज इंटेस्टिनल जूस और सक्कस एंट्रिकस. इंटेस्टिनल जूस को और क्या कहते हैं हम? सक्कस एंट्रिकस. तो दैट इज द सोर्स ऑफ दिस एंजाइम एंटीरोकाइनेज. सो ट्रिप्सिन में फाइनली ये कन्वर्ट हो गया. नाउ ट्रिप्सिन इज द एक्टिव फॉर्म. Students, chymotrypsinogen, they are also in active form. They are activated into chymotrypsin with the help of trypsin. So trypsin अब अपने आप क्या करेगा? chymotrypsinogen को chymotrypsin में कन्वर्ट करेगा. पहले अपने आप एक्टिव हुआ, फिर अब आगे दूसरों को एक्टिव करेगा. इसी तरह से नेक्स्ट स्टूडेंट, procarboxypeptidase which is in inactive form, it is also activated with the help of trypsin into carboxypeptidase. So both proenzymes trypsinogen and procarboxypeptidase are activated with the help of trypsin itself. Next students, now the proteins which are reached in the small intestine, they are broken down with the help of trypsin or chymotrypsin into peptones or proteases, into intermediated forms which are still have to convert into the simpler form. एक बात याद रखेंगे स्टूडेंट्स, जितने भी एंजाइम्स that works for the digestion of protein in small intestine, that all like to work in alkaline medium. जबकि स्टमक में जो एंजाइम थे प्रोटीन डाइजेस्ट करने के लिए, they like to work in acidic medium. So जितने भी एंजाइम यहाँ प्रेजेंट हैं, they are all working in alkaline medium because जितनी भी secretions हैं, pancreatic juice, intestinal juice, they are alkaline in nature. Next student, when protein are converted into peptones or proteases by trypsin or chymotrypsin, trypsin और chymotrypsin ने वही काम किया जो पेप्सिन ने स्टमक में किया था. तो फाइनली अब ये पेप्टोन्स और प्रोटियोसेस आर कन्वर्टेड विद द हेल्प ऑफ कार्बोक्सीपेप्टिडेज इनटू डाइपेप्टाइड्स. डाइपेप्टाइड मतलब ऐसे स्ट्रक्चर जिनमें आप कितने अमीनो एसिड्स है? सिर्फ 2 अमीनो एसिड. डाइपेप्टाइड, डाई मींस 2, पेप्टाइड मीन अमीनो एसिड. सो क्या हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टूडेंट? पैंक्रियाटिक जूस की सहायता से काइमोट्रिप्सिनोजन एक्टिव किया ट्रिप्सिन ने काइमोट्रिप्सिन में, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज को भी एक्टिव किया कार्बोक्सीपेप्टिडेज में. फिर प्रोटीन जो पहुंचे थे स्मॉल इंटेस्टाइन में विद द हेल्प ऑफ ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, दे कन्वर्टेड टू पेप्टोन्स और प्रोटियोसेस व्हिच फाइनली ब्रोकन डाउन इनटू डाइपेप्टाइड्स विद द हेल्प ऑफ कार्बोक्सीपेप्टिडेज. अब देखते हैं इंटेस्टिनल जूस का क्या रोल है. सबसे पहले स्टूडेंट, इंटेस्टिनल जूस का दूसरा नाम क्या है? सक्कस एंट्रिकस. एंड सक्कस एंट्रिकस स्टूडेंट कंटेन 3 प्रोटीएजेस. फर्स्ट इज एंटीरोकाइनेज और एंटीरोपेप्टिडेज, जिसका फंक्शन हम पहले ही बात कर चुके हैं. इट एक्टिवेट्स पेप्सिन. सेकंड स्टूडेंट एमिनोपेप्टिडेजेस एंड थर्ड इज डाइपेप्टिडेजेस. तो इंटेस्टिनल जूस के अंदर कितने एंजाइम्स हैं? 3 प्रोटीएजेस. अमीनोपेप्टिडेजेस क्या करता है स्टूडेंट? जो पेप्टोन्स और प्रोटियोसेस हैं उनको डाइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है. इसका काम भी कार्बोक्सीपेप्टिडेज की तरह ही है. नेक्स्ट स्टूडेंट्स,
dipeptides are then converted with the help of dipeptidases into amino acids. Now they are further finally broken down into the simplest form, that is amino acids. So amino peptidases ने क्या करा, वही काम करा जो कार्बोक्सी पेप्टाइडेसिस ने करा था, और डाइपेप्टाइड्स को डाइपेप्टाइडेसिस ने फाइनली अमीनो एसिड्स में ब्रेक कर दिया. तो इन दिस वे स्टूडेंट द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इज गेट कंप्लीटेड. स्टूडेंट कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बात करें तो जो प्रीडेटरी एनिमल्स होते हैं, दोज हु टेक ब्लड एज अ मील, they have some enzymes for the digestion of blood proteins. That's why they are taking blood as a meal. Some predatory animals की बात कर रहा हूं मैं. इसके अलावा स्टूडेंट वर्टिब्रेट्स की बात करें तो वर्टिब्रेट्स कुछ फाइब्रस प्रोटीन जो होते हैं, जैसे हेयर के अंदर केराटिन लाइक या सिल्क प्रोटीन जो होते हैं, उनको डाइजेस्ट नहीं कर सकते. लेकिन अगर इनवर्टिब्रेट्स की बात करें, कुछ इंसेक्ट्स की, खास करके कुछ ऐसे इंसेक्ट जो हमारे सिल्क के कपड़ों को काट देते हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उनके केस में अगर बात करें, या लकड़ी को खराब कर देते हैं कुछ इंसेक्ट्स, तो क्यों कर पाते हैं वो? क्योंकि जो लकड़ी या सिल्क के अंदर जो प्रोटीन्स पाए जाते हैं, उनको डाइजेस्ट करने के लिए उनके अंदर एंजाइम्स होते हैं. तो वर्टिब्रेट्स में खास करके फाइब्रस प्रोटीन, हेयर के अंदर जो है केराटिन या वुड के अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं, उनको डाइजेस्ट नहीं कर सकते. लेकिन इनवर्टिब्रेट्स में खास करके इंसेक्ट, they can digest silk protein and the protein that are present in wood. That's why they are able to destroy that particular substances, that is silk fiber or wood substances. Now students, in this way this topic of digestion of protein is get completed. Thanks.